Good morning, children. Standard 8 History, Chapter 7 Exercises continues with the next question 10. What is the question? What problems did the Indian textile industry face in the early years of the development? Write down what problems did the Indian textile industry face in the early years of its development. What problems did the Indian textile industry face in the early years of development? Write down answer. In the early years of its development, the Indian textile industry faced several problems. First, it found difficult to compete it with the cheap textiles imported from Britain. Second point, in most countries, governments supported industrialization by imposing heavy duties on imports. These eliminated competition and protected newly born industries. But the colonial government in India refused such protection to local industries. However, during the First World War, when textile imports from Britain declined, Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies.
These boosted up cotton factory production in India. Then question identity. What problems did the Indian textiles industry face in the early years of its development? तो जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और जो उनका स्टार्टिंग में डेवलपमेंट्स हुआ तो उनको कौन से प्रॉब्लम फेस करे? तो इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस several problems. One by one, write down. It found difficult to compete with the cheap textile imported from Britain. सबसे पहले तो इंडियन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को डिफिकल्ट हुआ, कंपटीशन थी उनके साथ क्योंकि ब्रिटेन से चिप टेक्सटाइल्स इंपोर्ट होकर आते थे. इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स. And third point, this eliminated competition and protected newly born industries. But the colonial government in India refused such protection to local industries. However, during the First World War, when textile imports from Britain declined, Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies. This boosted up cotton factory production in India. Write down next question. What helped TISCO expand steel production during the First World War? So what helped TISCO expand steel production during the First World War? Before the First World War, India imported British steel for rails. When in 1914 the war broke out, steel produced in Britain now had to meet the demands of war in Europe. So imports of British steel into India declined, and the Indian railways turned to TISCO for supply of rails. As the war dragged on for several years, TISCO had to produce, sell, and carriage wheels for the war. In 1919, the colonial government bought 90%
of the steel manufactured by TISCO. Over the time, TISCO became, what is the full form of TISCO? Tata Iron and Steel Company became the biggest steel industry within the British Empire. British Empire. Now I repeat the answer. What helped TISCO expand steel production during the First World War? Before the First World War, India imported British steel for rails. Before the First World War, India imported British steel for rails. तो रेल्स के लिए इंडिया कहाँ से स्टील लाते थे? ब्रिटिश से, ब्रिटेन से. When in 1914 the war broke out, 1914 में जब वॉर ब्रॉक हुआ, स्टील प्रोड्यूस इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में स्टील प्रोड्यूस होता था, नाउ हैड टू मीट द डिमांड ऑफ वॉर इन यूरोप. तो वही सेम स्टील डिमांड हुआ यूरोप में आफ्टर द वॉर ब्रॉक आउट. सो इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश स्टील, जो ब्रिटिश से स्टील आता था इंडिया में, इम्पोर्टर होकर इंडिया में, तो सो इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइन. उसके वजह से यूरोप में जो ब्रोकआउट हुआ, सॉरी इंडिया में आफ्टर 1914 में जो वॉर ब्रोकआउट हुआ, उसके वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश स्टील था वो इंडिया में आना बंद हो गया. एंड द इंडियन रेलवेज टर्न टू टिस्को. तो इंडियन रेलवेज ब्रिटिश से स्टील लेने के लिए वो वहां से स्टॉप होने के बाद कहाँ से वो इंडियन रेलवेज टर्न टू टिस्को, Tata Iron and Steel Company, for supply of rails. As the war dragged on for several years, TISCO had to produce sails and carriage wheels for the war. In 1919, the colonial government bought 90% of the steel manufactured by TISCO. Colonial government ने भी more than 100% में, more than 90% स्टील कहाँ से मैन्युफैक्चर होकर आता था? TISCO से. And over the time, TISCO became the biggest steel industry within the British Empire. और ब्रिटिश एम्पायर में TISCO biggest steel industry expand हुए. Next question. यहाँ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास 12 and 13. First see the 12 question. Find out about the history of any craft around your area you live. You may wish to know about the community of craftsmen, the changes in the inquiries they use and the markets they supply. How have these changed in the past 50 years? Students should visit the local library and collect the information regarding, और नेट में से भी सर्च करके आप ले सकते हैं गूगल में. 13 question. On a map of India, locate the centers of different crafts today. Find out when these centers came. तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है. आपको इंडिया मैप में आपको लोकेशन करना है, आपको मार्किंग करने हैं सिंबल के साथ कि सेंटर्स ऑफ डिफरेंट क्राफ्ट्स टुडे, आज के जो सेंटर्स है डिफरेंट क्राफ्ट्स के. तो हमको यहाँ पर मेन देखने हैं सिल्क क्राफ्ट्स. कौन से हमारे पास? सिल्क, चेन्स, चेक्स एंड स्ट्रिप्स एंड प्लेन वाइट. तो यहाँ पर डिफरेंट सेंटर्स है. मैप क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल इन गुजरात देयर वर मेजर वीविंग टेक्सटाइल्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. तो आप गुजरात में बता सकते हैं. बंगाल बता सकते हैं. वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर लोकेटेड अराउंड द न्यूमरस रिवर्स इन डेल्टा Deccan. Now Bangladesh was famous for its Malmal and Jandani weaving, and southern region of India includes important cotton weaving centers. Example Madras, Pondicherry and Nagapatnam, etc. So 13 question your map based question है. Thank you very much.